built-in math functions. अब देखें minimum and maximum out of a list. See, so x is the minimum of 5, 10, 25 and y is the maximum of 5, 10, 25. So x is 5 and 5 is 25. So ये minimum और maximum का function हो गया. इसके बाद आपके पास है absolute का function. So if it is y is absolute of minus 9.3. So there we go. This is absolute of 9.3 minus 9.3, which is 9.5. And then we have got power. So x is power of 5 squared. Okay. 2 to the power 5. See, 25. 5 power 20. See, a bigger number. So that is all possible with power. And then there is a math module as well. So you can import math as well. So import math. Okay, so in that case, it would be like math dot square root of 25. See, sqrt square root sqrt. See, this is 5. Pay attention to the type of the result. This is float data type. It is not integer. Then we have ceiling and floor. Ceiling and floor is rounding up, rounding down. It is not round. It is different. ठीक है? अब देखिए, अगर आप सीलिंग पे जाएंगे तो 1.4 की सीलिंग होगी 2. अगर आप फ्लोर पे जाएंगे तो 1. उसकी जो सीलिंग होगी वो होगी 1. ठीक हो गया. इसी तरीके से आपके पास पाई का फंक्शन है और आप इन सारे मैथमेटिकल मॉड्यूल्स को जो है वो अपने उस पर देख सकते हैं. कोई इशू नहीं है. कंप्यूटर पे देख लें कौन कौन से मैथ्स के मॉड्यूल्स हैं. ये सब कुछ हो गया.